Hello everyone, this is Mandeep Singh 𝐂𝐭 and today we will be deep diving into chapter 8 of designing data intensive application which is trouble with distribution system. क्या trouble आ सकती है distribution systems के अंदर? So we will be deep diving into all those troubles. What can be the issues when you actually operate inside the distributed systems? क्योंकि ऐसा होगा कि यार आप सिंगल मशीन पे तो इतनी ट्रैफिक सर्व कर नहीं रहोगे. There will be multiple machines, there will be multiple machines, multiple servers that will be serving your traffic. Let it be database, let it be your application code servers. There will be multiple servers. So in case of distribution systems, what troubles can you face, and what can be the potential solutions for those? So we will be specifically focusing on those troubles, and what are the possible solutions, what are the potential solutions of all those troubles which can be caused in distributed systems. If you are not yet subscriber of our channel, I'm MsDeep Singh. So चैनल का नाम मिट गया है, ये आ गया है वापस. So MsDeep Singh, consider subscribing. We keep on making content on system design and distribution systems and cloud, so you will learn lot of things. So जब हम trouble की बात करते हैं, what are the troubles? ठीक है. So if you think on the Uber level, it can be fault or failures which are occurring in your system. There are certain faults which have occurred in your system, there are certain failures that have occurred in your system. ठीक है. So what can be a fault? Let's say when you are using a single computer, uh, you have a single machine and you have deployed some application code on there. ठीक है. So let's say this is your machine here. ये गया, it's loading, and yeah. So let's say you have your this machine here. So if any application code which is deployed here, you will be able to there is very less chances that you will face issues with it. There are very less chances that you will face issues with it. But in case of distributed systems, in case of distribution systems, there is a possibility that some parts of that distribution system might go wrong. ठीक है. So let's draw it here only. It's keep on connecting. So let's say in case of distributed systems, you will have multiple machines, right? So in case of multiple machines, what if this particular machine went down? What will happen? Okay, so you will have to handle these kind of scenarios. You have to expect these scenarios that this might happen, and then how will your system operate in these kind of scenarios? How will your system operate in these kind of scenarios if this particular thing happens? Now first thing could be unreliable network, कि जो आप network use कर रहे हो. ठीक है, कि let's say my client is in India and my servers are in USA. What if my network is down? What if there is some issues in the internet? What if the internet went down? What if the DNS service I am using went down? So how will these things be handled? What about the unreliable networks? What about the possible faults that can occur in the network? तो हम उनको कैसे handle कर पाएंगे, और how our system will behave? What is basically troubles क्या आ सकते हैं? तो in case of unreliable networks, what we are assuming here, that we have a shared nothing architecture. When we say shared nothing architecture, it means that you have your multiple machines here. Each machine will have their own memory and own disk. Now when we say shared nothing architecture, it means that this particular machine will not access this memory. This machine will only access this memory and this disk. The memory or the disk or any of the resources which are specific to that server are not available for access to other servers. So this is what we mean by shared nothing architecture. Now what are the possible things, what are things that can go wrong in this? One could be that your request is lost or waiting in queue. ठीक है, आपने रिक्वेस्ट सेंड करी and it is lost or waiting on the queue due to the unreliable network. Another thing would be that your remote machine failed or temporary unresponsive. You sent a request but your remote machine is not responsive. There is some issue. The issue happened in that machine and it is not responding, it is not returning the response, or response took more time than expected. Let's say always I expect that I get a response in 5 seconds, and after that 5 seconds I will time out the request. What if the server actually sent the response but it sent the response in 6 seconds?
ठीक है, तो सर्वर विल अज्यूम दैट आई हैव सेंट द रिस्पॉन्स बट क्लाइंट क्लोज द रिक्वेस्ट आफ्टर 5 seconds. ठीक है, so there is some ambiguity there. So what are the possible solutions? One possible solution could be that you add a timeout so as request don't keep on waiting. ठीक है, and once the timeout has occurred you basically retry the request. ठीक है, कि मैंने पहले रिक्वेस्ट भेजा अपने रिमोट सर्वर को, द रिक्वेस्ट वाज नॉट सर्व्ड, सो आफ्टर 5 seconds आई विल टाइम आउट द रिक्वेस्ट एंड देन आई विल ट्राई टू रीट्राई. ठीक है, I will catch the exception. What is the exception I got? If I get the retriable exception, then I will try to retry and try to resolve the issue. ठीक है, तो all these issues could have occurred due to the network faults. All the three issues we discussed. Now, how you can detect these failures? How can you detect these network faults? What are the potential solution? One first is automatic detection. ठीक है, कि हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, हम कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्टली वो अपने आप हैंडल हो जाए. इट इज हैंडल्ड ऑटोमेटिकली. तो कैन इट बी डन? ठीक है, so let's say the possible ways of doing this is, one is that load balancer don't send request to faulty nodes. Let's say you have your three nodes here. Now in these three nodes, the load balancer which is serving these requests, is not is able to detect the faulty node. Let's say you have your load balancer here and your client is sending request. Now you are able to detect, this load balancer is able to detect a faulty node. Let's say it is sending the health checks to all the nodes. Now, if load balancer is able to figure out, that this particular node 3 is not healthy, then I will cut the connection unless the node is back, unless the same node is back or another node replaces this. ठीक है, so until then I will not send a request, so that I will not face such scenarios which we discussed right now, that your remote machine has failed or temporary unresponsive, because the load balancer automatically figured that out कि उस machine में कुछ दिक्कत है, and I am not going to send the request to that. The request will be sent to the available machines here, and the response will be sound from these machines. So this could be the one way. Another could be, if leader fails in their follower is promoted to DB. Let's say let's take example of your database cluster. ठीक है, तो you have your database cluster, you have three nodes, D1, D2, D3, and this is your leader node. ठीक है, we are discussing a scenario about single leader application. So you have single leader and then you have multiple followers. You have F2, F1 and F2. ठीक है, this we discussed in our databases chapter. What are the possible ways of replication? So in case of single leader application, you have a single leader and then you have multiple followers. ठीक है, तो basically single जो leader रहेगा, it will accept the writes and all the reads request can be served from leader as well as the followers. So what we are discussing, let's say this leader is down. Let's say similar to our approach earlier, that we have load balancer, or we have something, let's say zookeeper, which maintains the status of all these nodes. So what if this leader is down? If the leader is down, another node should be promoted as follower. ठीक है, ताकि जो क्लाइंट्स रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, देन ऑल द लॉजिक इज अब्स्ट्रक्टेड आउट फ्रॉम देम. ठीक है, लीडर इज डाउन, हमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हमें राइट करना राइट होना चाहिए. इफ लीडर इज डाउन, सम अनदर नोड शुड बी प्रमोटेड एज लीडर. ठीक है, समझे ना बात? तो नाउ this we discussed, right? So what if we are not able to figure out the node is dead or not? ठीक है, in this scenario we discussed that we will send regular health checks here, and then we will try to figure out if node are healthy or not. ठीक है, what if this load balancer is not able to figure out? कि भाई मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि मरा या नहीं मरा है. ऐसे क्या, तुम डॉक्टर तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा, ऐसे पता तो तुम्हें करना पड़ेगा कि मरा या नहीं मरा. अब तुम पता ही नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि मरा या नहीं मरा, डेड और नॉट, लाइव और नॉट अलाइव. सो in those scenarios there can be it could be possible, right? See your load balancer went corrupt, or like the health checks are not working, because anything can go wrong in the network. ठीक है, basically your health checks are also based on the network. ठीक है, health checks are also based on the network कि मैं उस node से connect कर रहा हूँ and then I'm trying to check.
One example is Node OS is running, but node process crashed. The particular process you are interested in crashed. The node actual node is running, the operating system is running, but you are specifically interested in one daemon कि वो daemon alive है या नहीं है. The daemon is dead. So another node should take cover and before the request timeout. This is the one possible scenario that कि आप कोई request serve कर रहे थे. Let's say your particular request was being served and this was handled by a particular process. ठीक है. So let's say in this same example that your load balancer uh, forwarded your request to n1 node 1 and this node 1 the particular process we are interested in. ठीक है कि एक process run होना चाहिए था जो process उस request का response return करेगा. That particular process is down. If that particular process is down, then we are able to figure out that, and then at the same time the load balancer will send the same request to another node so that the request can be served. ठीक है. हो सकता है कि there is some extra time taken, there can be some extra latency which is observed in the client's end, but at least we are solving the request. ठीक है. जब हम बात करते हैं distributed systems की, we try to provide the best experience. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि what will you choose. ठीक है. Let's say एक example अपना ये है कि मैं रिस्पॉन्स बिल्कुल सर्व नहीं कर पा रहा एंड अनदर सिनेरियो इज दैट आई एम सर्विंग द रिस्पॉन्स बट विथ वेरी लाइक मोर लेटेंसी. ठीक है. आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, लेट्स से एप्पल एप्पल आपने गूगल पे सर्च किया. एक तो एप्पल बिल्कुल वो गूगल कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा. ठीक है कि मैं एप्पल का रिस्पॉन्स ही नहीं दूंगा, मैं एप्पल का रिस्पॉन्स ही नहीं दूँ. अदर थिंग वुड बी दैट देर इज सम इशू एट द गूगल सर्वर्स एंड इट इज़ रिटर्निंग द रिस्पॉन्स आफ्टर 5 seconds. ठीक है. एटलीस्ट आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स. ठीक है. थोड़ा कस्टमर एक्सपीरियंस इज इम्पैक्टेड बट एटलीस्ट आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स. समझे बात. तो दिस इज द वन एग्जाम्पल वी डिस्कस्ड. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. जैसे क्या कर रहे हैं हम, यूज़र कंप्यूटर है, यूज़र कंप्यूटर है, यहाँ पे अपना हैंडसम सा लड़का मनदीप. मनदीप क्या कर रहा है, मनदीप इज टाइपिंग www.google.com एंड ही इज सर्चिंग समथिंग. सो हाउ विल योर रिक्वेस्ट बी राउटेड. लेट से योर रिक्वेस्ट विल बी गोइंग टू योर होम राउटर, द राउटर विच यू कॉन्फ़िगर्ड. ठीक है. जिस भी IFC से आपने इंटरनेट ले रखा है, आपने कुछ राउटर कॉन्फ़िगर कर रखा होगा. ठीक है. यहाँ से होम राउटर से इट विल गो टू ISP, देन इट विल गो टू इंटरनेट. यहाँ पे देयर कुड बी मल्टीपल हॉप्स इन देयर. ठीक है कि हॉप 1 H1 देन H2 देन H3. ठीक है. द रिक्वेस्ट विल बी राउटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कुछ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वी विल बी टेकिंग दैट अप इन सम अनदर वीडियो. बट once the request hops from one point to another, then your final the request will be landed to Google servers where the request will be actually served. और उसका response क्या है, मतलब हम basically application को देखेंगे, हाँ this is the request, this particular API, this is the request, then I have to retrieve the response for it and then I have to return this response to the clients. ठीक है. जो भी client की request आई है उसको serve करना है हमें, right? So what if something goes wrong in the internet. What if something goes wrong in the internet, if something goes wrong in the internet during traffic routing, home router might think that Google servers are down. ठीक है. समझे बात. एक तो ये हो सकता है कि मैंने वहाँ पे टाइप किया www.google.com. ठीक है. तो मेरे को वो दिखाएगा कि यू आर नॉट एबल टू एक्सेस इट. ठीक है. क्लाइंट सर्वर एरर आ रहा है मेरे को 5. तो आई विल थिंक दैट गूगल सर्वर्स आर डाउन. मतलब ऐसे लोग नहीं सोचेंगे ज़्यादातर, पर अगर आपको थोड़ा बहुत टेक का नॉलेज है तो यू माइट थिंक कि गूगल इज़ डाउन, कि आइदर माई इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग और गूगल इज़ डाउन. गूगल पे हम इतना विश्वास करते हैं कि गूगल तो डाउन जा ही नहीं सकता, तो हमारा इंटरनेट ख़राब हुआ होगा. ठीक है. दिस इज़ व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द आउटेजेस, दैट वी ट्राई टू फिगर आउट कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन माई इंटरनेट बट द सर्विस माइट बी रनिंग. ठीक है. सो what could be the possible solution. TCP might acknowledge packet being delivered, but what if application crashed. Lot of issues. ठीक है. तो there could be possibility that TCP acknowledge the packet, that particular packet, the request packet we are sending, but the application might have crashed on the Google servers. So these are the all scenarios which can occur, and the solution in all those scenarios is that you retry the request. ठीक है कि मेरे I'm getting particular exception from our servers, and what you are trying to do, you are कैचिंग दैट एक्सेप्शन कि हाँ मेरे को रिट्राइबल एक्सेप्शन आया है, देन आई विल रिट्राई टू दैट रिक्वेस्ट after a certain timeout which you have configured. Now one thing which you have to keep in mind, we have also discussed in multiple videos that you have to not retry with a मतलब ऐसे ही आंख बंद करके. ठीक है.
you have to configure some timeout in between ki हाँ like first request was tried about 100 milliseconds, then I will try after 300 millisecond, then I will try about 600 millisecond. ठीक है, so these things you have to keep in mind so that you are not bombarding the server with lot of requests. ठीक है, so either it should be handled at a client's end, and if you are not trusting the client कि client पे हम विश्वास नहीं कर सकता, this should be handled at the server end, so that from particular servers, from the particular IP you are not getting too much of request. You have to rate limit those कि retry storm आपके servers के ऊपर आ गया कि you are not able to serve other customers as well. ठीक है, तो in these kind of scenarios you have to handle that at servers end. But this is the potential solution that you retry after a certain timeout. समझे बात? Now हाँ भाई गायब हो जा, जगह चाहिए हमें थोड़ी सी डायग्राम बनाने के लिए. Now let's move to another topic, which is timeouts and unbounded delay. We discussed that timeout we have to retry after certain timeout. Now what are the general ways which you can retry. ठीक है, तो when we say timeout, ठीक है, timeout की वैल्यू क्या होगी? When we say timeout कि I will retry after a certain timeout, what is the value of this timeout कि कितना timeout के बाद में मैं retry करूं. समझे बात कि आई हैव सेंड दिस रिक्वेस्ट टू दिस पर्टिकुलर सर्वर, आई हैव वेटेड फॉर 5 seconds, शुड आई रीट्राई नाउ, should I reiterate or no, or should I wait for more time? ठीक है, so this will completely depend on the use case, completely depend on the use case कि ऐसा हो सकता है कि particular API it returns the response in 100 milliseconds. So if I'm not getting response in even 200 milliseconds, then I should time out the request and then retry. But there could be some scenarios where I generally expect that request will be served within 10 seconds. ठीक है, तो वहां पे कोई सेंस नहीं बनेगा कि you time out the request after 200 milliseconds and then retry, because anyway you are not getting the response in 100 milliseconds or 200 milliseconds, you will anyway get the response in 10 seconds. ठीक है, so you have to at least wait for some time more than 10 seconds कि मैं 12 सेकंड के बाद में वेट टाइम आउट कर रहा हूँ, then I will retry, or timing out after 15 seconds and then I am retrying. ठीक है, so you have to figure out that basis the client, basis the use case, what the use case you are representing, क्या आपके सर्वर्स इतना टाइम आउट मतलब कितनी लेटेंसी में रिस्पॉन्स रिटर्न करने वाले हैं. You will have to figure that out, you will have to figure that out, and then accordingly you have to configure the timeout values in your clients. And now in general discussion the timeout should be not too long. ठीक है, कि ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, या फिर इट शुड नॉट बी टू शॉर्ट. अगेन दिस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द यूज केस कि मेरे लिए टू शॉर्ट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टू शॉर्ट एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टू लॉन्ग. ठीक है, द सेम एग्जाम्पल वी डिस्कस्ड. इन वन एग्जाम्पल इट कुड बी पॉसिबल दैट 100 milliseconds इज टू लॉन्ग फॉर मी. ठीक है, बट इन अनदर सिनेरियो दिस 100 millisecond is too short for me. ठीक है, so this will completely डिपेंड ऑन द यूज केस. यहाँ पे कोई जनरल रिकमेंडेशन नहीं आपको मिलेगी, यू हैव टू फिगर दैट आउट. ठीक है, दिस इज what is all about system design. ठीक है, सिस्टम डिजाइन में there is no perfect solution, you will have to figure that out basis your use case कि आपका यूज केस क्या है, आपके सर्वर्स कितनी ट्रैफिक हैंडल कर पाते हैं, what are the servers. ठीक है, so depending on all those things you will have to figure that out कि टाइम आउट क्या होना चाहिए. But the general recommendation is that for specific use case it should be not too long and it should not be not too small. ठीक है, क्या होगा अगर मैंने उसको टू लॉन्ग कर दिया. व्हाट इफ द टाइम आउट इज टू लॉन्ग, यूजर हैव टू वेट लॉन्ग. ठीक है, टाइम आउट ज़्यादा कन्फिगर कर दिया तो यूजर हैव टू वेट लॉन्ग. ठीक है, आई एम जनरली एक्सपेक्टिंग कि रिक्वेस्ट 5 सेकंड में आएगी, फिर भी आप 50 सेकंड वेट करो तो कोई सेंस बनता नहीं है. ठीक है, दैट सर्वर माइट बी डाउन, यू शुड हैव बीन टाइम्ड आउट द रिक्वेस्ट आफ्टर 7 seconds लेट्स से, एंड देन इट शुड हैव बीन रीट्राइड सो दैट द रिस्पॉन्स इज रिटर्न. समझे बात? तो in these kind of scenarios you should have timeout after a certain time. And what if the timeout is too small? ठीक है, node may be actually operational but slow to respond. ठीक है, example due to overload. ठीक है, this there is a possibility that there is too load on that server right now. ठीक है, there is too much load on that server right now. तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है कि request are being queued up before returning the response, and then the response is returned because the request were being queued up. So this will take some extra time. ठीक है, latency थोड़ी increase हो गई है उस केस में. समझे बात? तो
जिस्ट क्या है बात की, जिस्ट ये है कि टाइम आउट जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग एंड इट शुड नॉट बी टू शॉर्ट. What about the unbounded delays? When we say unbounded delays for asynchronous networks, there is no upper limit for packet to be delivered. ठीक है, तो asynchronous networks में we are not configuring any kind of timeout कि इसके बाद में मेरे पास request response आना चाहिए. We are not configuring any timeout. We are assuming that the server will handle that request at his end, and then I will assume that it will be processed. ठीक है, मेरे पास मैं acknowledgement भेज दूंगा कि I have got the request and then I will process it by my time. ठीक है, let's take this example here. This is your client and this is your servers. ठीक है, तो मतलब टाइम आउट कितना हमें रखना चाहिए, उसका हम जो हमने इतना बड़ा जिक्र किया है उसके बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं. तो लेट्स से दिस इज योर क्लाइंट एंड दिस इज योर सर्वर. नाउ you are sending one particular request and then you are getting one response. ठीक है, so let's say the time taken from this client to server request को travel करने में, this packet to be traveled let takes time d. ठीक है, and this server once the request has landed on this server it takes time r to process that request to return the response. ठीक है, तो d टाइम लिया, फिर इसने r लिया, फिर वापस हमें response रिटर्न करना, it will again take time d. तो the timeout which you can configure is d plus r plus d is 2d plus r. गणित. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई मेंशन, राइट? यू विल हैव टू फिगर आउट डिपेंडिंग ऑन यूज केस कि मेरे को कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, बेसिस द एनालिसिस यू आर डूइंग, जैसे आप लोड टेस्टिंग भी करते हो, लाइक एनी एनालिसिस यू आर डूइंग. ठीक है, यू विल हैव टू फिगर आउट कि मेरे यूज केस के हिसाब से ये टाइम आउट हो सकता है, एंड दैट यू हैव टू कॉन्फ़िगर. मूविंग टू अनदर टॉपिक, वी मेंशन दैट यहाँ पे we mentioned somewhere that your request might be queued up. हमने कहाँ डिस्कस किया था, आई डोंट रिमेंबर, बट वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन मोर डिटेल राइट नाउ. सो network congestion and queuing. Let's first understand about network congestion. So request more than threshold has to be wait to be served, and queuing is until the request are served they are kept in queue. ठीक है, network congestion मतलब एक ये अपना पाइप था, इसमें 3 रिक्वेस्ट आ सकती है, पर आपने क्या किया, आपने बहुत ज़्यादा भेज दी, तो नेटवर्क कंजेशन हो गया. जनरल, दिस इज द जनरल मीनिंग. ठीक है, तो डैम ओवरफ्लो हो गया. अगर डैम में आप ज़्यादा पानी डालोगे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा. ठीक है, तो डैम ओवरफ्लो होना है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द नेटवर्क. ठीक है, सो इफ आई दिस द नेटवर्क द सर्वर्स आई हैव कॉन्फ़िगर्ड. ठीक है, द सर्वर्स आई हैव कॉन्फ़िगर्ड, इफ they can support TPS till 10 and if you want to serve them TPS of 100, तो क्या होगा, all of the request will be dropped out. ठीक है, या तो आप उन रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दो, else they will be queued up, ताकि जब उनका टाइम आएगा, ठीक है, जब उनका टाइम आएगा और द सर्वर इज अवेलेबल टू सर्व दो रिक्वेस्ट, तो उस टाइम में द रिक्वेस्ट विल बी पिक्ड अप एंड देन इट विल सर्व बाय द सर्वर, बट the request will be queued up to be served later by the server. Queuing can also be at client end. Yeah, so queuing in general is at server end, but it can also be at the client end, and it can be managed by TCP, which is called TCP flow control, back pressure on the client. ठीक है, सर्वर पे आप प्रेशर क्रिएट नहीं करें, बैक प्रेशर का. अब हम बात करें कि आप सर्वर को फ्री कर दे रहे हो कि उसके पास एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आएगी, यू आर मेंटेनिंग ऑल दोज रिक्वेस्ट एज द क्लाइंट एंड देन क्लाइंट विल हैंडल कि मेरे को कितनी रिक्वेस्ट उस सर्वर को भेजनी है. दिस पर्टिकुलरली वी डिस्कस्ड इन आवर डिस्कॉर्ड वीडियो where we discussed about how Discord handled notifications at scale. ठीक है, तो वो वीडियो आप देखना, आपको मज़ा आ जाएगा. अब TCP वर्सेस UDP छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करेंगे. व्हेन वी से TCP इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. व्हेन वी से TCP इट कैन बी यूज टू परफॉर्म फ्लो कंट्रोल. UDP में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती. रीट्राई. In case of TCP, we try to ensure that your packets are not lost. जो भी आप भेज रहे हो they are delivered to the server या फिर back to the client. But in case of UDP, we don't provide such functionalities. जो 1 और 2 यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, this is 1, this is 2. We don't have support in this UDP. UDP is mostly like we don't want to send the live data. ठीक है, we don't want to delay the request. ठीक है, TCP में क्या है कि हम वेट कर लेंगे. और मानो
मानो अपना क्रिकेट मैच चल रहा है और इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया फाइनल में खेल रहा है, अभी धोनी छक्का मारने वाला है, अब तुम उसका रेस्पॉन्स अगर 10 सेकंड बाद में रिटर्न करोगे, 10 सेकंड के 5 मिनट बाद में रिटर्न करोगे, 1 सेकंड बाद भी रिटर्न करोगे, तो मोमेंट मिस हो गया भाई। मोमेंट मिस थोड़ी ना होना चाहिए। तो उस टाइम में हमें यूडीपी चाहिए। क्यों चाहिए हमें यूडीपी? इट्स ओके, इट्स ओके कि आई सी द ब्लर स्किन, थोड़ा मेरे को धोनी क्लियर नहीं दिख रहा अभी, पर एटलीस्ट आई वांट टू सी कि वो छक्का 1 सेकंड पे 12 बज के 1 मिनट पे लगा था, तो मेरे को उसी टाइम पे देखना है, बाद में नहीं देखना मेरे को, ठीक है? समझे बात? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। नाउ let's move to our another topic, which is synchronous versus asynchronous networks. You might have gone through this in your college subjects or like multiple YouTube videos as well. Synchronous versus asynchronous. Synchronous में हम क्या करते हैं कि request भेजी, response will be returned at the same time. In case of asynchronous, we send the request but we don't wait for response to be returned, ठीक है? We assume at our end कि response अपने आप handle हो जाएगा, basically जैसे publisher subscriber model में होता है कि basically you send the request एंड देन द मैसेज विल प्रोसेस एट हिज ओन रेट, ठीक है? जब भी उसको बाकी सामने वाले क्लाइंट को कंज्यूम करना होगा, इट विल कंज्यूम एट हिज ओन रेट। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आई ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मी इज दैट आई पास ऑन द रिक्वेस्ट, ठीक है? वहां पे मेरा काम खत्म हो गया। बाइसेप्स ट्राइसेप्स। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल, फिक्स्ड लाइन टेलीफोन नंबर, फिक्स्ड लाइन टेलीफोन नंबर, ठीक है? तो फिक्स्ड लाइन टेलीफोन नेटवर्क में क्या होता है? इट इज अ सिंक्रोनस नेटवर्क। नाउ इन दिस केस you have a fixed guaranteed bandwidth which is allocated to two users. Let's say this is your user one, कहाँ बनाया होगा हमने? Yeah. So this is your mobile one, telephone one, and this is your telephone two, ठीक है? Now in this case, now in this case uh, specific bandwidth specific bandwidth will be allocated to these two users, ठीक है? 16 bits in each direction and the packet is sent every 250 microseconds, ठीक है? काफ़ी कम है। अब बात जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं तो इट शुड बी मतलब जो भी अपना सामने वाला लोग इंसान बोल रहा है, वी वांट टू कैप्चर दैट, ठीक है? So the fixed guaranteed bandwidth is allocated and this is synchronous network, we already mentioned that. Now in this case there is no queuing, 16 bits is reserved for this particular network। जैसे पूरा इंटरनेट है, इसमें 16 बिट्स जो ये यहाँ पे रिजर्व हुई है इन ईच डायरेक्शन, देयर विल बी नो अदर यूजर विच विल बी इंटरप्टिंग दिस बैंडविड्थ। ऐसा नहीं कि कोई और मोबाइल यूजर करे उसको भी ये एलोकेट हो जाएगी ना, वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर नॉट डूइंग दैट। वाई? क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए एंड दिस इज पॉसिबल फॉर दिस यूज केस ओनली, ठीक है? दिस इज नॉट पॉसिबल इन जनरल फॉर आर इंटरनेट यूज केस, दिस दैट विल बी डिस्कसिंग इन सम टाइम, बट here your latency will be kind of fixed because you have allocated the bandwidth to them, ठीक है? यहाँ पे there is no interference in between, there is no interference in between जो इन users को affect कर दे। the bandwidth which is allocated over the internet कि मैंने एक ये लाइन allocate कर दी, तुम यहाँ पे बातचीत करो, there will be no interference in there, ठीक है? तो latency will be kind of fixed, ठीक है? Because there is no issue in sending the packets। Now this concept is not used in TCP। why? We mentioned that ये हम जनरल इंटरनेट पे भी यूज़ करें, क्यों नहीं यूज़ करें? करो भाई, जो बैंडविड्थ एलोकेट कर दो आप, हैं? पर नहीं करेंगे हम। हम क्यों नहीं करेंगे? Why we are not doing this? Should we use packet switching over internet as well? We should not use it, we don't have exact bandwidth requirements, ठीक है? In this scenario we had the exact requirements that for each direction we are configuring 16 bits, but in case of internet, ठीक है, it can depend heavily on the use case कि मेरे को कितनी बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है? और फॉर दैट पर्टिकुलर यूज केस एज वेल, आई एम नॉट श्योर कि रिक्वेस्ट एक बार इतनी हो गई फिर बाकी इतनी हो गई, ठीक है? इतनी इतनी इतनी, आई एम नॉट श्योर ऑफ द बैंडविड्थ, सो यू विल एंड अप वेस्टिंग द बैंडविड्थ, ठीक है? और यू विल एंड अप, क्या होता है उसका उल्टा, ठीक है? आइदर यू हैव लेस बैंडविड्थ और आई यू हैव मोर बैंडविड्थ, देयर विल बी वेरी लेस सिनेरियोज कि यू हैव स्पेसिफिक बैंडविड्थ जहाँ पे कुछ वेस्टेज नहीं हो रहा है या फिर आपको कम नहीं पड़ रही। सो दिस इज द इशू, you will end up wasting bandwidth or allocating less bandwidth, depends on the use case। समझे बात? should not be used for bursted traffic, we are not anyway using it now।
This is all about unreliable networks. We discussed about what unreliable network is. We discussed about what are the potential solutions. We discussed about a lot of things. Now move to another unreliability thing, which is unreliable clocks. We use clock at lot of places. Okay, we use clock at lot of places. Let's say one example could be कि I am hitting Google servers. जो Google का हमने example लिया था, I am hitting the Google servers and I want to calculate the latency कि मेरे को कितना time लग रहा है. I want to calculate the latency that the request I sent and the response I received, the time which we talked about, कि 2D plus R, what is that time? ठीक है, I want to calculate that 2D plus R, what is that 2D plus R? ये 2D plus R जो तुमने बात करी है ये मेरे को कैलकुलेट करना है, बताओ कैसे कैलकुलेट करूँ. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट हम करते हैं, वी यूज़ क्लॉक्स. ठीक है, घड़ी हमें चाहिए ताकि हम टाइम को कैलकुलेट कर पाएँ. तो दिस क्लॉक्स कैन बी ऑल्सो अनरिलायबल. ठीक है, क्या होगा, क्या होगा इफ दैट क्लॉक इज नॉट गिविंग अस द राइट टाइम. ठीक है, उसका सेल खराब हो गया. दिस एक्चुअली डोंट हैपन इन नेटवर्क्स बट वन पॉसिबल bottleneck. तो clock is used as multiple places in system. Example, calculate latency of operation. This we mentioned that we want to calculate that 2D plus R. As there are multiple machines in network, time calculation on each machines might vary. ठीक है, there could be different scenarios, different ways in which time is calculated. There can be different clocks. ठीक है, मेरे को एक घड़ी यूज़ करनी है, मैं तो पाँच पाँच मिनट आगे रखता हूँ टाइम. ठीक है, आई ऑलवेज वांट टू बी अहेड ऑफ टाइम. आपने घर में देखा होगा कि भाई मैं घर में जो घड़ी है, जो मेन घड़ी है उसमें 15 मिनट आ गए हैं, जो एक घड़ी है उसमें 5 मिनट आ गया. ठीक है, according to our needs, according to our judgment, we configure that time. ठीक है, so similarly it can happen in the actual distributed systems as well. ठीक है, हम वहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि मेरे को 5 मिनट हमेशा आगे रखना है. We are not doing that, but there could be some issues. There could be it can heavily depend on the machines. ठीक है, कि if there is some issue, if there is some bottleneck, if there is some, the system is paused for a while. ठीक है, although there are multiple issues that can occur, basically the gist is the clocks which you are using can be unreliable and the time which you are calculating 2D plus R might not be not we might not get it correct. So for synchronization of clocks, mostly network time protocol is used. When we talk about distributed systems, we want that the multiple machines we have same time on all of them. Okay, same time on all of them. And for the time synchronization, we use NTP. NTP is network time protocol. Network time protocol हम use करते हैं for synchronization of time across the machines in a distributed system. अंधेरा हो गया. There are multiple clocks. So we mentioned that there could be multiple clocks. First clock is time of day clocks, which is based on your wall clock. Current date and time according to the same calendar. Wall clock time. Example Java. In case of Java, if you use system.current time millis, it will return the number of seconds per milliseconds each epoch. Which is after January 1, 1970 midnight UTC. Now, in scenarios of local clock is too far ahead of NTTP, it will jump back to previous point in time. क्या होगा? क्या होगा? Let's say you have these your three machines. If this particular machine is ahead of NTP, ठीक है कि NTP पे time T1 था, NTP server पे time is T1 and this is at time T2. So if it is too ahead of time, this T1 and T2 difference is too large, then it will jump back to time. ठीक है, इट विल कम बैक टू टाइम T1. तो यहाँ पे हो सकता है इशू क्यों हो सकता है कि आई वॉज मेजरिंग दैट लेटेंसी एट दिस टाइम. ठीक है, माई रिक्वेस्ट वॉज गोइंग ऑन दिस सर्वर एंड आई वॉज मेजरिंग लेटेंसी एट दिस टाइम. नाउ दिस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प फ्रॉम T2 went to T1. ठीक है, तो द 2D plus R might be negative in this case. The R which I was calculating in case of 2D plus R, the R which I was calculating it might be negative. हाँ भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं सर्वर नेगेटिव टाइम ले रहा है टू सर्व दैट रिक्वेस्ट, है नहीं होता ना ऐसा. तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अनरिलायबल क्लॉक्स. इन सिनेरियोज ऑफ लोकल टाइम्स वी डिस्कस दिस. It will jump to back to previous time, not a good solution for calculation of elapsed time. ठीक है, we should never use huge statement, but we should never use. NTP काफी improve हो रहा है over the time. ठीक है, and we need some kind of synchronization mechanism, right? We need some kind of synchronization mechanisms between the nodes. But in case of specific instances, let's say you want to calculate elapsed time. Okay, so for certain use cases you have to see that will using time of day clocks
let's say in case of Java, will system.current time millis of your use case, ठीक है. तो it will completely depend on use case again. हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, वी हैव टू फिगर आउट व्हाट आर यूज केस, व्हाट आर द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यू हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन. अनदर एग्जांपल ऑफ क्लॉक इज मोनोटोनिक क्लॉक्स. यहाँ पे हम पीछे नहीं जाएंगे टाइम में, हम हमेशा आगे जाएंगे. So in case of monotonic clocks guarantee to always move forward. In case of Java you have system.nanotime, ठीक है, मेरे को जावा का ही नॉलेज है, बुक में भी ये एग्जांपल दिया, और भी कुछ examples थे, but I have mostly knowledge around Java. But you can just Google it around, and then for any of the language you code in, you can check that which is the clock which gives time basis, time of day clocks, wall time clock, or monotonic clocks. Okay. So this in the monotonic clock is not dependent on synchronization between different nodes. It is not dependent on the NTP will not cause to jump back or forward. No synchronization is required. Example on how NTP can go wrong. Okay. व्हाट आर द एग्जांपल्स, ठीक है, कि क्या इशू हो सकता है एनटीपी के अंदर. जो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, कोई डीमन चल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत आ सकती है. सो एनटीपी डीमन इज मिसकॉन्फ़िगर्ड ऑन सर्वर. When the initial time, when initially the servers, the NTP servers, NTP daemons were being set up on particular nodes, there might be some misconfiguration. तो उसमें क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते आप, आपको ध्यान रखना होगा कि आप मिसकॉन्फ़िगरेशन ना करें. यू हैव टू be sure कि any configurations you are doing, the configurations are correct and not wrong. Firewall is blocking traffic, ठीक है. The NTP daemons which are running on your machines will connect NTP servers. What if the requests to NTP servers are blocked by your firewall roles, ठीक है. तो you have to ensure that this is not this traffic is not blocked, so that your clocks are synchronized. Clock offsets between servers should be monitored. You like for handling all these scenarios, what you can do, you can monitor the clock offsets between servers in case clock on one node drift too much from others. Let's say you have three nodes in this case, right? You on each nodes you assume you want कि time should be same, t1 t2 t3, t1 should be equal to t3 should be t3. But if there is two time lag between one particular node from other nodes, ठीक है, if there is two time lag, तो what you should do, you should kill this node and another node should come up with the correct time. In case of you can declare it node will depend on business your servers are spawned off. Again आपके यूज केस पे डिपेंड करेगा कि आपको करना क्या है, बट दिस इज वन पोटेंशियल सॉल्यूशन कि यू क्या करो आप, you bring down the server and new server comes up on its place with the current time. Example, like what could be such business uses. Let's say you want to use last write wins algorithm on DB cluster, ठीक है, कि मेरे को राइट कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करनी है ना, आई एम यूजिंग फॉर रिजॉल्विंग दोज कॉन्फ्लिक्ट्स आई एम यूजिंग लास्ट राइट विंस, ठीक है. सो for these scenarios you want कि the time which you are getting for each request कि वो write किस time पे हुआ था, this particular writes, there are multiple concurrent writes, ठीक है. So I want to figure out कि कौन सा write पहले हुआ, so that I can actually use last write wins algorithm properly on that my DB cluster, ठीक है. तो for this particular scenario the best solution is कि आप उस node को down ले आओ and new node comes up with correct time. For scenarios of in this case for scenarios where ordering of events is independent, logical clocks can be used. Logical clock आपकी digital clock से आप compare कर सकते हो. Why? Because it is based on incrementing counters. It helps in identifying relative order of events, ठीक है, कि let's say my system serves certain orders, ठीक है. We will be discussing this more in next chapter as well, ठीक है, जहाँ पे हम causality की बात करेंगे. But let's say you expect some ordering of events, ठीक है, E1 E2 and E3, ठीक है, and then E3 should come after E2 and E2 should come after E1, ठीक है. तो what is the potential one possible solution कि आप टाइम स्टैम्प से डिटरमाइन करो कि पहले कौन आया था, ठीक है. बट वी डिस्कस राइट नाउ कि टाइम स्टैम्प कुड बी रॉन्ग. What if the timestamp this event got from server 3 and server 3 is behind the time, so I will assume कि E3 को पहले process करना है before E2,
ठीक है. So there is some issue. So for these scenarios we can use logical clocks. Logical clocks is based on the counters, incrementing counters instead of time elapsed. ठीक है. Now let's discuss one scenario कि how system pose can cause issues. Let's say I have 3 servers in my cluster. What if for a certain time the server is in pause state? कि ठीक है कि मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए, मेरे को एक दिन की छुट्टी चाहिए और इस एक दिन की छुट्टी में मैं कोई काम नहीं करूँगा. व्हाट इफ दिस काइंड ऑफ सिनेरियो हैपेंस? ठीक है कि भाई मैं 5 दिन काम कर रहा हूँ, मेरे को भी वीकेंड चाहिए है, मैं पूरे हफ्ते तो काम करूंगा नहीं. वर्क लाइफ बैलेंस, आई वांट वर्क लाइफ बैलेंस. सो इफ माय पर्टिकुलर नोड डिमांड्स वर्क लाइफ बैलेंस, तो व्हाट कुड हैपन, व्हाट कुड गो रॉन्ग? नाउ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स से दिस इज योर डेटाबेस क्लस्टर. लीडर है आपके पास, कुछ फॉलोवर नोड्स हैं F1 F2. ठीक है. एंड व्हाट वी आर ट्राइंग, this what we are discussing, we are taking example of single leader application. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, we have to first figure out who is the leader. ठीक है. So to for figuring out leader, and node in coordination can take lease for certain time out. ठीक है कि एक particular node है, ठीक है, वो एक certain time के लिए लीज लेगा कि हाँ मेरे को 5 मिनट के लिए लीडर बनना है. ठीक है, मेरे को 5 मिनट के लिए लीडर बनना है. इट गोट अग्रीमेंट फ्रॉम ऑल द नोड्स. ठीक है, एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एज लीडर. Now, after 5 minutes, if this particular node want to stay as leader, this particular node again have to reach out to these nodes and then again take the lease. ठीक है, आप गवर्नमेंट में कोई नेता बन रहे हैं तो 5 साल के बाद में आपको दोबारा वोट लेने पड़ेंगे. ऐसे थोड़ी ना कि आप एक बार बना दिए तो आप हमेशा के लिए बने, वो नहीं. समझे बात? सेम गोज हियर, दैट you have to take a lease and once you get approval you are leader. But after a certain time, once the lease is expired, एक बार लीज एक्सपायर हो जाती है तो उस केस में यू विल हैव टू टेक दैट लीज अगेन. So this lease needs to be updated once timeout expires. So how can you do it? Via synchronized clocks. पर synchronized clocks में तो इशू आ सकते हैं. If nodes don't update lease, it is assumed dead and another node should take over. ठीक है. तो let's say the node is paused for a certain time. ठीक है, the node is paused for a certain time. It took lease for 5 minutes, but the node is in pause state. And if the node is in pause state, I will assume that the other node, मैं नहीं करूँगा assume, the other nodes will assume that this particular leader is down. हमें नया leader ढूंढना पड़ेगा. समझिए बात? तो in this perfect setup, what could go wrong? Setup perfect है अपना, but what could go wrong? Because this is a distributed system, anything would go wrong. And what can go wrong in this particular scenario? Least time depends on the time taken from another machine. Synchronized clocks. ठीक है, least time depends on time taken from another machine. Time taken from another machine. What if clocks are out of sync? It can cause issues because this particular node is dependent from the time taken from another machine. ठीक है, मैंने इसको बोला कि मेरे को 5 मिनट चाहिए, इसको बोला कि 5 मिनट चाहिए, पर ये तो आउट ऑफ सिंक था, तो इसके लिए तो हो सकता है वो 4 मिनट ही हो गए हों. ठीक है, तो there could be some issues due to clock synchronization. To solve one, we can use monotonic clocks. ठीक है, clock synchronization issue solve करना है तो for that we can use monotonic clocks. What if there is unexpected pause in the system? We are using monotonic clocks, but what if there is unexpected pause in the system? Example, due to garbage collector. ठीक है. So particularly what happens in the system when there is a garbage collector running? Garbage collector basically collects all the garbage. ठीक है, जो deleted objects आपके हैं, basically remove those ताकि आपकी memory free up हो जाए. ठीक है, memory free up हो जाए. So in this kind of scenarios, system will be at halt for a certain time. ठीक है, it will be very less time, but system will be at halt. ठीक है. So example garbage, we will discuss that how can you resolve this. And one another scenario could be that OS access disks for accessing memory pages. ठीक है, in case of virtual memory हम क्या करते हैं कि अपने पास 2 GB मेमोरी है, पर भी assume कि अपने पास 4 GB मेमोरी है, but like by storing some pages in the disk, and when required we will fetch those pages in the memory. But in this maybe what could go wrong? If the thread is paused as IO takes place and lot of time is spent in doing IO rather than actual processing. ठीक है,
मेरी मेमोरी बहुत कम है एंड आई एम यूजिंग टू मच ऑफ वर्चुअल मेमोरी, देन आई विल गो टू डिस्क देन कम बैक, go to disk and come back. So there is lot of time which is actually spent in fetching those patches from the disk without doing that actual processing बहुत कम हो रही है, अपना most of the time जा रहा है in fetching those patches. ठीक है, कि जैसे मेरा ये मेमोरी है और ये मेरा डिस्क है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्चुअल प्रोसेसिंग करता हूँ आर टाइम में, बट आई एम डूइंग दैट डी टाइम, ठीक है, तो आई विल गो टू डिस्क, आई विल कम बैक टू डिस्क, ठीक है, अगेन आई नीड ए पेजेस. So this kind of scenario is called thrashing. Now coming back to our GC. Coming back to GC, how can you resolve it? ठीक है, GC तो हमें करना पड़ेगा. We have to do this. We have to remove the deleted object. C++ में क्लाइंट के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, अपने आप करेगा जो भी उसको करना है. बट इन केस स्टार्टिंग फ्रॉम जावा और लाइक एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस, लेट्स से पाइथन और एनी अदर, it is handled by the programming language itself. ठीक है, so can we treat GC as a planned outage? ठीक है, तो what if जब भी मेरा GC चल रहा है उस पर्टिकुलर मशीन में, आई ट्रीट इट एज ए प्लान्ड आउटेज, और उस टाइम में वो कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा, इट विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, नो रिक्वेस्ट सर्व्ड बाय नोड इन दिस टाइम यूज, सो दैट इन दिस सिनेरियो मतलब एटलीस्ट ये नहीं होगा कि रिक्वेस्ट आर वेटिंग. ठीक है, कि जब GC कंप्लीट हो जाएगा देन इट विल बी सर्व्ड, दे विल बी एटलीस्ट नॉट क्यूड अप. आई विल नो कि हाँ द GC इज रनिंग ऑन दिस सिस्टम राइट नाउ, सो आई एम नॉट गोइंग टू सेंड एनी रिक्वेस्ट टू दिस, लेट द GC कंप्लीट एंड देन आई विल सेंड द रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर. ठीक है, समझे बात, आ गई बात समझ में, आ गई. Now use GC only for short-lived objects and restart processes periodically. ठीक है, रीस्टार्ट करने पे काफ़ी सारी IT की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर बिकॉज इट विल हेल्प रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑन द गलत हो गया या इट विल हेल्प reducing impact on application. लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक विच इज फेंसिंग टोकन्स. ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस द प्रॉब्लम. ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देन वाई हाउ कैन यू रिजॉल्व इट वाया फेंसिंग टोकन. सो व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम. ठीक है, तो लेट्स से वी हैव योर दिस डेटाबेस क्लस्टर, we have your database cluster, we have three nodes n1 n2 n3, और जो लीडर होगा वो राइट करेगा. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने बोला था कि लीज ले लेता है, फिर वो लीज लेके बात करता है, काम करता है, लीज लेके काम करता है, तो यहाँ पे वो हो रहा है. ठीक है, तो व्हाट वी डू हियर, वी हैव थ्री नोड्स n1 n2 and n3 एंड हियर द लीडर विच इज n1 acquired a lock and write to file. दिस इज योर पर्टिकुलर फाइल. ठीक है, दिस इज योर पर्टिकुलर फाइल. नाउ GC प्रोसेस स्टार्टेड एंड नोड गोज टू पोस्ट स्टेट. GC प्रोसेस स्टार्टेड यहाँ पे n1 नोड पे, and it has went to pause state. Now n1 and n2 and n3 will assume that n1 is dead. Why? Because it is in pause state and is not serving any request. ठीक है, so n2 and n3 will assume that it is in pause state, so n2 will acquire lock and start writing the file. ठीक है, कि भाई और कोई राइट नहीं कर रहा, मैं लीडर बन जाता हूँ नया, मेरे को लीज दे दो, है, समझे बात. तो उसको हमने लीज दे दिया and it is has started writing the file. Now after a certain time, once the GC has completed, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा क्या कि n1 will come back. Once the n1 comes back, it will start writing again to that same file. It will start again writing to the same file and it will corrupt the file. पहले यहाँ पे n1 राइट कर रहा था, फिर n2 ने स्टार्ट कर दिया, फिर n1 वापस आ गया कि मेरे को भी राइट करना है, मैं भी लीडर हूँ. So this can cause issues. So with every log, keep it, how can you resolve it? By using fencing tokens. How can you resolve such kind of scenarios? It is by using fencing tokens. What we mean by fencing tokens, so with every lock you are giving to that node. ठीक है, मैंने n1 को मैंने नोड n1 को मैंने लॉक दिया, फिर मैंने n2 को लॉक दिया. So every lock, what you are doing, you are keeping a counter which is incremented every time a lock is granted for write. So in above scenario, let's say n1 is granted 10, n1 post, n2 will be granted 11 in this case. ठीक है, so if n1 comes back again and it has token as 10, it will be rejected कि भाई अभी तो 11 का नंबर चल रहा है, तुम कहाँ से आए अभी तुम लीडर नहीं हो, अभी तुम हो फॉलोवर. ठीक है, तो फॉलोवर बन के क्या करना है, तुम्हें राइट नहीं करना है, तो अपनी फाइल जो थी तुम्हारी उस पर कोई और राइट कर रहा है अभी. बट वट इफ n1 होशियार निकला एंड n1 अपडेट्स द टोकन एट हिज एंड, कि मैंने अपना खुद का टोकन अपडेट कर लिया, n1 नोज कि n2 हैज बिकम लीडर नाउ. सो गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है यार यहाँ पे. तो n1 अपडेट द टोकन एज हिज हैंड एंड सेंड 11 इंस्टेड ऑफ 10. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, these are called बाइजेंटाइन फॉल्ट्स.
ठीक है. So we generally assume this in case of distributed systems कि this kind of scenarios will not happen, कि node अपने end से कुछ नहीं करेगा. This can happen definitely, कुछ भी हो सकता है distributed systems में, but we generally assume, ठीक है, in most of the scenarios this will not happen. Let's move to our final topic of this chapter. काफी लंबा वीडियो हो रहा है. Safety and liveness. What we mean by safety? So even if entire system crash, network fail, algorithm should always return correct result. This is what we mean by safety. And what we mean by liveness, response is sent by server if certain conditions are met. Example, quorum of nodes. ठीक है. So इन दोनों का mixture we have to ensure to get the correct response out of the application. ठीक है, कि we have to ensure safe, मतलब कि your application is always up. Basically you are ensuring the availability. If entire system crash, network fail हो गया, कुछ भी हो गया, algorithm should always return the correct result. ठीक है, there could be two possible things here. ठीक है, करेक्ट रिजल्ट पे आपको फोकस करना है. व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर रिटर्निंग करेक्ट रिजल्ट, यू आर माइट बी कॉम्प्रोमाइजिंग द कंसिस्टेंसी हियर. ठीक है, compromising नहीं बोलूँगा, compromising का उल्टा, not compromising the consistency here, but what if to ensure liveness you have returned the less consistent result. ठीक है, so these are the kind of things which you have to keep in mind. We will see you in next chapter with more interesting concepts जो किताब में है, जो मनदीप ने सीखा है. So we will be back with another video soon. Till then, stay safe. Tata, bye bye.